Welcome, students. RN Classes is back with a discussion of another school paper. Today, on 24th of February, St. Kabir Public School, Chandigarh conducted their Term 2 examination for mathematics for Class 8, Session 22-23. It was a 2 hours examination and maximum marks awarded was 50. Let's dive into it. Section A. Each question carries 1 mark. The area of rhombus whose diagonals are 16 and 18 is. So area of a rhombus क्या होता है? Half d1 into d2. So मेरे पास d1 की वैल्यू तो है ही. d1 कितना है? 16. d2 कितना है? 18. So 2 9 times 16 nines are 144 centimeters square. This is the area. Let's go to the next one. X plus y is 9, xy is 20, x square plus y square की वैल्यू चाहिए. okay? यहां से यहां कैसे पहुंच सकता हूं? x plus y का होल स्क्वायर करके. x plus y whole square is square plus y square plus 2xy, right? x plus y that is 9, उसका स्क्वायर करना है मुझे. x square plus y square has to be found out. Plus 2 xy की वैल्यू 20 दी हुई है. This comes out to 81 और यहां पे 40 था, इसको इधर ले आते हैं. Minus 40, that will give you x square plus this goes to 41, gets you the value of x square plus y square. That simple, that fast. Next one. Find the value of x. 3 raised to the power 3x plus 1 divided by 81 is equal to 729. देखते ही हमें ये पता चल रहा था भाई सारी की सारी 3 की पावर से. तो 3 की पावर 3x plus 1, राइट, डिवाइडेड बाय 81 को भी तो लिख सकता हूं 3 की पावर 4 एंड 729 को भी 3 की पावर 6. नाउ यहां पे भी 3 की पावर, यहां पे भी 3 की पावर, बीच में है डिवीजन. सो आई एम गोइंग टू यूज a raised to the power m divided by a raised to the power n. Powers would get subtracted, m minus n. So 3 की power 3x plus 1 minus 4, which is going to give you 3 raised to the power 6. Now 3 की power क्या आ जाएगी? 3x minus 3, which is equal to 3 raised to the power 6. Right? Bases are same, बीच में equality, powers has to be same. 3x minus 3 is equal to 6. So 3x will get you 9. X will get you. Next one. 2 dice rolled together. Find the probability of getting multiple of 3 on which first die and even number on the second die. सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि भाई probability होती क्या. Probability of an event कैसे define करते हैं? Total possible outcomes, right? ये तो आता है हमारा denominator. What is in the numerator? Number of favorable outcomes in numerator, right? So a total number of possible outcomes, I know भाई 2 dice are rolled, so those are 36. अगर मुझे favorable मिल जाए, problem is solved. 2 dice, ये आया मेरा first die, यहां पे उसके बाद आएगा first die पे multiple of 3 होना चाहिए, so it can be either 3 or it can be 6. second die पे क्या हो सकता है? second die पे भाई 3 अगर फर्स्ट डाई पे है तो सेकंड डाई पे इवन नंबर 2, कोई और इवन नंबर 3 के साथ 4, कोई और नंबर 3 के साथ. सो यहां पे मेरे पास 3 आउटकम्स बनते हैं. 6 के साथ भी 2, 4, 6. हाउ मेनी? 1 2 3. 3 यहां पे, 3 यहां पे, टोटल इज 6. 6 by 36 is 1 by 6. Next one. Find 6 1 by 4% of 25. So 25 kgs, of course. So this will become 25 by 4% of 25 kgs, right? Up 25 by 4
परसेंट पर 100 ऑफ मीन्स इनटू 25, राइट? सो अब बिल्कुल सिंपल है, 25/4 into 100 into 25. 25 4 times. So this will become 25/16. Can also be written as 19/16. See, कितना सिंपल है। और इसको एक और वे में भी लिख सकते हो, 1.5625, whatever you like, जिस मर्जी वे में लिखो, all are correct. सेक्शन बी पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन इज ऑफ 2 marks each, थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा। सो 81 into x raised to the power minus 6, 6 raised to power 3, 4 raised to the power minus 2, x raised to the power minus 7. 81 तो 3 की पावर 4 लिख दिया, into x raised to the power minus 6, wonderful। यहां पे बना 6, एक काम करते हैं, इसको मैं लिख देता हूं 2 into 3 पावर 3, 4 को मैं लिख देता हूं 2 का स्क्वायर की पावर माइनस 2, और यहां पे लिख देता हूं x रेज टू द पावर माइनस। सो मैंने 2 into 3 लिखने के लिए क्या यूज किया, a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m, पावर m ही रहेगा, a इंटू b हो जाएगा। आई यूज दिस। सो यहां पे 3 रेज टू द पावर 4 इंटू x रेज टू द पावर माइनस 6, और यहां पे 2 रेज टू द पावर 3 into 3 raised to the power 3 into 2 raised to the power minus 4 into x raised to the power minus 7. क्या यूज किया, और a raised to the power m raised to the power n is equal to a raised to the power m in. You have to write all the formulas if you want to get full. Now, अब देखो ध्यान से, 3 की पावर डिवाइड हो रहा है a raised to the power m divided by a raised to the power n, a raised to the power m minus n. So I'm going to use this 3 की power 4 minus 3. And same way, x की power minus 6 minus of minus 7. Right? कुछ और यूज किया, 2 की पावर, so a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus, so यहां पे क्या आ जाएगा, 2 raised to the power 3 plus of minus 4, right? So next side पे चलते हैं, यहां पे, right? 3 raised to the power 1 into x raised to the power minus 6 plus 7 divided by 2 raised to the power 3 minus 4. So 3 into x raised to the power 1, x ही रहने देंगे, 2 raised to the power minus 1, that will go up. तो हम उसको लिख सकते हैं 3 into 2 x, which is nothing but 6. Full 2 marks back. All steps has to be mentioned. Question number 7. A farmer has enough food to feed 30 cows for 12 days. How long would the food last if he buy 10 more cows for the farm? अब डायरेक्ट एंड इनवर्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले वेरिएबल्स क्या है, काउस एंड फूड, मतलब कि नंबर ऑफ डेज। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल्स नंबर ऑफ काउस यहां पे एंड नंबर ऑफ डेज यहां पे। सो सबसे पहले नंबर ऑफ काउस, हाउ मेनी काउस आर देयर, 30, हाउ मेनी डेज, राइट? अब how long the food would last if he buys 10 more cows. 10 more cows means how many cows are there, 40. How much time the food would last, let's suppose it is x. Of course you have to write that line, right? अगर मैं नंबर ऑफ काउस को बढ़ा देता हूं, तो फूड वुड लास्ट फॉर मोर डेज और लेस डेज, कोर्स लेस डेज, भाई खाना तो सेम है, काउस तो ज्यादा हो गई। सो इट इज अ क्वेश्चन ऑन इनवर्स वेरिएशन, राइट? सो 30/40 is equal to x/12. तो मैं सीधा लिख सकता हूं x की वैल्यू 30/12/40. This goes 4 3s x is equal to 9. Another 2 marks. Yours. 8th. Factorize this. अब
ये तो भाई हमारी क्वाड्रेटिक है। भाई क्वाड्रेटिक को तो सॉल्व करना अभी तक सिखाया ही नहीं, बट फैक्टराइज करना है गाइस। फैक्टराइज करना तो सिखाया है। ये 3 टर्म्स हैं, क्या लगा सकते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एज सिंपल एज दैट। दो नंबर्स को ऐड करके क्या बनना चाहिए? -29। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। उन्हीं दोनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 into 35 हो जाएगा। तो 6 into 35 is 210. Now, what are those numbers? Of course, you can find those number as 14 into 15, that is 210, and 14 plus 15, that is 29. But negative होने चाहिए दोनों, दोनों नेगेटिव मैंने कर दिए। तो 6t square minus 14t minus 15t plus 35. So फर्स्ट टू में से कॉमन क्या निकलेगा? 2t। एंड अगर मैंने यहां से 2t कॉमन निकाला, क्या बचा? 3t minus 7। और यहां से मैंने 5 कॉमन निकाला, क्या बचेगा? 3t minus 7। राइट, सो 3t minus 7 is taken out as common, क्या बचा? 2t minus 5। वंडरफुल, फैक्टराइज हो गया। 2 marks are yours। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन फैक्टराइज। भाई वहां पे तो 3 टर्म्स थी, कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा था। यहां पे तो कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है कॉमन? भाई 4 कॉमन दिख रहा है मेरे को तो। राइट, 4 कॉमन निकाला, यहां क्या बचा? 4। और यहां पे क्या बचा? 4 कॉमन निकला तो 36। अब x रेस पर 5 x क्यूब, क्या निकालूं? x क्यूब भी कॉमन आएगा। यहां पे बच गया x स्क्वायर और यहां पे बचा कुछ भी नहीं। तो 4x क्यूब बाहर ही रहेगा। इसका क्या करें? बीच में माइनस आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए, मजा आ जाए। सो 2x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। राइट, सो आई विल यूज a square minus b square, which is a plus b into a minus b. Quite simple and straightforward. This will become 4x cube. यहां पे क्या बच जाएगा? 2x plus 6 and 2x minus 6. See, इतना ही सीधा है। नेक्स्ट वन, अब सेक्शन सी पे पहुंच गए। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 3 marks. Let's go ahead. A and B together can paint a wall in 10 days. A and B together takes 10 days to paint a wall. Right? A alone can paint, A alone 1/4 of wall. वो कितने दिन में पेंट करेगा? 20 days में। मेरे को निकालना है B alone कितने दिन में पेंट करेगा। ओके, A alone 1/4 ऑफ द वॉल को 20 डेज में पेंट करेगा। तो A alone 1 वॉल को कितने डेज में पेंट करेगा? फाइंड इट आउट। 4 टाइम्स करना पड़ेगा। 20 into 4, इट विल टेक हिम 80। राइट, नाउ अब मुझे तो निकालना है B alone 1 वॉल, पूरी वॉल को कितने दिन में पेंट कर सकता है? आई डोंट नो, से X डेज। अब भाई इसको सॉल्व करने के लिए आई कैन फाइंड A एंड B, मतलब कि A प्लस B वन डे में कितना काम कर सकते हैं टू पेंट द वॉल? 1/10 ऑफ द वॉल कैन बी पेंटेड। राइट, A 1 डे में कितना पेंट कर सकता है अलोन? 1/80th ऑफ द वॉल। अच्छा, B 1 डे में कितना पेंट कर सकता है? 1/x। वंडरफुल। सो A प्लस B, मतलब कि A 1 डे में प्लस B 1 डे में कितना पेंट कर सकते हैं? जितना A प्लस B टुगेदर 1 डे में पेंट करते हैं उतना ही कर सकते हैं। राइट, so A alone can paint 1/80th of the wall. B alone can paint 1x of the wall. A and B together can paint 1 by, कितना दिया हुआ था भाई? 1/10 of the wall. Right? So 1 by x is equal to 1 by 10 minus 1 by 80. I have to take LCM. 1 by x is equal to, denominator में आया 80. 10 8 times, so 8 minus 1. So 1 by x
is equal to 7/8. So x निकालना है मेरे को, तो x days 80/7 days, yeah, or 11 3/7 days. That's it. Next one. Sam borrows 5,000 rupees from a bank at 8% per annum. Okay. Borrowing is, मतलब कि borrow means principal मुझे दिया हुआ है 5,000 rupees, अब और मेरे को रेट भी दिया हुआ है, that is 8% per annum, right? Find the amount. Of course मेरे को amount निकालना है. He would be paying after 2.5 years. Time is 2.5 years. Okay, निकाला जा सकता है. Not a difficult task. 2.5 years. Compounded annually. Okay. Compounded annually. And also find the compound interest. वो तो निकल जाएगा. देखो, मेरे पास आया 2.5 years, right? और मेरे को हाफ ईयरली भी नहीं भाई, कंपाउंडेड एनुअली है. मींस 2 years को तो मैं कंपाउंडेड एनुअली निकाल सकता हूं, फिर सेपरेटली आई हैव टू फाइंड फॉर हाफ ईयर, राइट? अब 2 years को मैं कैसे निकालूं? ऑफ कोर्स विद कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट, of course compounded annually, not with compound interest. Amount is equal to principal 1 plus r by 100 raised to the power n. Amount is equal to 5,000. 1 plus 8% raised to the power 2. 4 twos are 4, 25 times means 27. So 5,000 अगर मैं LCM लेके लिख सकता हूं सीधा 27/25. I hope you can do that easily. 27/25. So 25 ones are 25 2 times. 0 0. 25 ones are 25 8 times. So 27 into 27 into 8 will give you 582. अब ये बन गया 5832 rupees after 2 years compounded annually. अब हाफ अ ईयर का ऐड करना पड़ेगा, सो आई नीड न्यू प्रिंसिपल विच विल बी 5832, राइट? सो मैं यहां पे पहले क्या निकालूंगा? सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तभी तो अमाउंट आएगा. सो सिंपल इंटरेस्ट वुड बी P into R into T by 100. सो P कितना है? 5832, राइट? कंपाउंडेड भाई, अमाउंट ऐड होता जाता है. रेट इज 8%, टाइम इज 1/2 by 100. So 2 4 100 को हमेशा एन में रखा करो, बड़ा ही अच्छा नंबर बनता है. तो 233.28 rupees. That is simple interest. So I can find amount final, which is going to be new principal plus simple interest. So that will be 5832 plus 233.28, which will be equal to 6065.2, right? So final amount तो मेरे पास आ चुका है. I'll write it on the next page. Final amount is 6065.28 rupees. One task done. Now I have to find the compound interest as well. So final amount is equal to principal plus compound interest, right? So this is given to be 6065.28 and the principal is given to be 5,000 plus compound interest. So compound interest कितना आ जाएगा? दोनों को माइनस कर देते हैं. That would be 1065.8, right? ये आ गया हमारा compound interest. Next one, divide. Okay, divide करना है भाई. X square plus 7x plus 12 by x plus 3. अब कुछ बच्चों ने तो यहां पे देखा होगा एंड कहेंगे यार लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा देते हैं, बट इज इट नेसेसरी? हम लोग इसको फैक्टराइज भी तो कर सकते हैं. दो नंबर सोचो जिनको मैं ऐड करूं तो 7 बन जाए, उन्हीं दोनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाए? ऐसे कौन से नंबर होंगे? 6 2 तो जाएगा नहीं. 4 3 4 and 3. वंडरफुल. सो मैं इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बाय x प्लस 3. इन दोनों में से कॉमन x इज कॉमन, क्या बचा? x प्लस 4. इन दोनों में से कॉमन
3 कॉमन निकाला, +4 by x plus 3, right? So x plus 4 common into x plus 3 by plus 3. So x plus 3 cancel हो गया. Final answer is x plus 4. आ तो गया. डिवाइड करके भी सेम ही आंसर आता, निकाल लिया हमने. Next one. Question 13. A shopkeeper marks his good 40% above the cost price, allows a discount of 5% for cash payment to his customers, right? Actual profit you have to find when he received 1064 from the customer, right? So marks his goods 40% above cost price means mark price is equal to cost price plus 40% of cost price. Then discount के बारे में कहा है, discount is 5%. Then we have to find the actual profit. Okay, done. And साथ में दिया है मुझे selling price. Selling price is 1064. Actual profit मुझे निकालना है, right? अब profit निकालने के लिए मेरे पास selling price है, तो cost price निकालनी पड़ेगी, right? अब selling price and discount अगर मेरे पास है, I can find mark price. So let the mark price be. So let's start from here. Selling price is equal to mark price minus discount. So selling price is 1064. Mark price is X. Discount is 5% of X, right? 5 ones are 5, 5, 20 times. 1064 is equal to 20 minus 1, that would be 19x by 20. So x is equal to 1064 into 20 by 19, right? So 19 ones are and 1956 times. So मेरे को यहां से मिल गया mark price, and the mark price was 112 rupees. So mark price मेरे पास आ चुका है. Now mark price say I can go to cost price. So let the cost price be y. So मेरे पास already equation है, mark price is equal to cost price plus 40% of cost price, right? So mark price is 1120, cost price is y plus 40% of y. This goes off, 2, this goes to 5. This would be 7y by 5, 1120. So y is equal to 1120 into 5 by 7, right? So 7 1 is 7 and 7 6 and then 0, right? So मेरे पास यहाँ से क्या आ गया? Cost price. So cost price is 800 rupees, right? मेरे पास mark price भी आ गया, cost price भी आ गया. Now I need to find profit. So profit is equal to selling price minus cost price. What is the selling price? 1064. What is cost price? That is given to be 800. So this would be 264 rupees. That's it. Profit मुझे मिल गया. यही नहीं निकालना था मुझे. That's done. Next one. Construct a rhombus best such that BE is 4.5, ET is 6 centimeter. Write the step of construction. Done. पहले हम बना के देखते हैं भाई, rhombus बना लेते हैं. Then we'll see कि बनाना कैसे उसको. So अगर मैंने यहाँ पे लिखा BEST, तो of course BE अगर 4.5 है, all the sides are 4.5. तो मेरे को sides दी हुई है. What else? ET, यहां से लेके ET 6 सेंटीमीटर दिया. कैसे बनाऊं? ये ट्रायंगल बना लो, ये ट्रायंगल बना लो. So what should I do? पहले ET बनाएंगे. I've already drawn it for you. पहले ET बनाएंगे, then P के लिए कट लगाएंगे 4.5 centimeters apart from E. Then T के लिए T से भी 4.5 centimeters apart. We can find B. ऊपर और नीचे S. So the steps of construction, मैंने दो steps लिख दिए हैं. Draw TE as 6 centimeter, bisect into two equal parts.
Draw up and down the perpendiculars to TE. Bilkul simple, straightforward, and you can write the steps of construction. I know, quite simple. Next. A road roller takes 750 revolutions to move over once to level the ground. Find the area of road if the diameter of road roller is 84 centimeter and the length is 1 meter. एक काम करते हैं, रोड रोलर बना के देखते हैं सबसे पहले. तो मैं इसको रोड रोलर ले रहा हूं, राइट. दिस इज आवर रोड रोलर, राइट. अब ये है which gets touched to the ground, ठीक है. तो वो पाथ कैसा लेगा? This is the path which is going to be followed, right? अब 750 revolution से पहले one revolution कितना एरिया कवर करेंगे, राइट? तो कितना एरिया कवर करेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर 2 पाई आर एल, राइट. सो वन रेवोल्यूशन के लिए हाउ मच एरिया इज कवर्ड? 2 into 22/7 r तो नहीं दिया हुआ. दिस इज गिवन टू बी 84, दैट इज डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 मीटर. अब मेरे को यहां पे 1 मीटर के लिए लिखना पड़ेगा 100, राइट. सो ये आ जाएगा फॉर वन रेवोल्यूशन एंड आई नीड टू फाइंड आउट भाई 750 रेवोल्यूशंस में कितना एरिया कवर होता है. 2 into 22/7 into 84/2 into 100 into कितना आया मेरे पास? दैट वुड बी 750. अब ये सब कुछ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो मीटर स्क्वायर में करने के लिए डिवाइड बाय 100. So 100 goes off directly and this goes off and और क्या जाएगा? 2 here, 2 11 times. This would go to 5. 5 ones are 5 and 5 fives are 25. This goes to 15. 7 1 the 7. So 7 1 the 7, 7 is a 14. So कितना एरिया कवर हुआ? 11 into 12 into 15. That is 1980. लिखना आपको आता है, मैंने आपको फंडा बता दिया. And you got the answer as well. Quite simple and straightforward one. Next. The following table marks obtained by 210 students in a class test. Marks दिए हैं, number of students. Represent the given information with the help of a histogram. Histogram बनाना है. That's it. So histogram के लिए x axis पे marks ले लेता हूँ, y axis पे number of students. So this is the histogram 0 to 10, कुछ भी नहीं है. 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60 as it was given. उसके ऑर्डर में मैंने सारी चीजें बना दी हैं. X axis 1 unit is 10 marks and y axis 1 unit is 10 students. This is also quite simple and straightforward. Next. Section D. Amit borrows 12,500 at 12% per annum for 2 years. Simple interest. Radha borrows the same amount for the same period at 10% per annum compounded half yearly. Who pays more interest and by how much? Okay. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमित की, right? जिस पे simple interest, right? So Amit borrowed 12,500, right? And हमारे पास rate of interest was 12% and time was 2 years, right? So simple interest निकाल लेते हैं हम लोग. P into R into T by 100. So simple interest would be P is 12,500, R is 12%, time is 2 years by 100. This goes off, so simple interest comes out to 3,000. मेरे पास simple interest आ चुका, right? Now we will talk about Radha, right? So Radha के लिए सबसे मेन चीज प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम 12,500. अब इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10% एंड टाइम वाज 2 years, बट द मेन कैच वाज हाफ yearly, right? So rate, the new rate
would be 5%, half हो गया, and n would be equal to how much? 4. So हम formula यहीं लिख देते हैं. Amount is equal to principal 1 plus r by 100 raised to the power. I'll directly use it. So amount is equal to principal is 12,500, 1 plus r. R कितना है? 5 by 100 raised to the power 4. So 5 on the 5, 20 times. So amount can be easily found as 12,500 into 21 by 20 into 21 by 20, 21 by 20, 21. 4 times, 0 goes off. Now, the main part. जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, you will get 15,193.82. Now, you need to find compound interest, right? So amount is equal to principal plus compound interest. Now, I have amount as 15,193.82 and principal is 2,500. Now, 12,500 plus compound interest. So you'll subtract it to get compound interest as 2693.82, right? So अब मेरे पास simple interest भी आ चुका है, compound interest भी आ चुका है, so I need to find the difference, right? So difference is equal to simple interest minus compound interest. Simple interest is 3,000. Compound interest is 2693.82. So your final answer would be 306.1. This is the difference. Quite simple and straightforward one. Calculation a little bit tough. Next. 3 fans were purchased for 450 rupees each. Okay. One of them was sold for a loss of 10%. At what price should the other 2 fans be sold so as to gain 20% on the whole transaction? What is the gain percent on these 2 fans? Like, मेरे पास क्या आया? Cost price of one fan is 450 rupees, right? One of them is sold for a loss. मतलब कि यहाँ पे मुझे loss हुआ, loss 1 would be 10%. This was given, right? So अगर loss हुआ, I can find the selling price of the first fan, right? So selling price would be cost price minus loss. यही होगा. So selling price for the first fan would be 450 minus loss was 10% of 450. This goes off. So selling price of one fan would be 450 minus 45. That is 405. अब मेरे पास selling price of the first fan तो आ गया. मेरे को whole transaction पे, अब मैं whole transaction की बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि उसने ही बोला, ठीक है, whole transaction पे. अब मेरे को 20% गेन चाहिए. ओके, सो कॉस्ट प्राइस टोटल कितनी होगी? 3 into 45, 3 into 450. सो टोटल कितना हो गया? 450, 5 3s are 15, 1 12, 1350. सो टोटल ट्रांजैक्शन पे मेरे को 1350 रुपीस लगे. मेरे को गेन मतलब कि प्रॉफिट चाहिए था 20% का. सो मैंने सेलिंग प्राइस टोटल निकाल ली, राइट? सेलिंग प्राइस कैसे आएगी? कॉस्ट प्राइस टोटल plus 20% on cost price of total. So 1350 plus this would go means 5. So 1 by 5 on 1350. So 1350 divided by 5. Oh, sorry. So 1350 divided by 5 would give you 270. Right? This would give you 270 rupees. So please plus 1350 would give you 1620. Means मेरे पास क्या हुआ?
मैंने पहले वाले फैन को 405 रुपीज में बेचा, बट टोटल फैंस को मेरे को 1620 रुपीज में बेचना है। मींस selling price of two fans would be selling price of total minus selling price of first. That would be 1620 minus 405, right? So that would be 1215 rupees. अब selling price of two fans तो ये है। अच्छा, cost price of two fans कितनी आई? That would be 900 rupees. So अब बताओ, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? मेरे को क्या बताना है? गेन परसेंटेज। अब बताओ, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ऑफ कोर्स प्रॉफिट हुआ। तो कितना प्रॉफिट हुआ? सेलिंग प्राइस ऑफ टू फैंस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ टू फैंस। सो मैंने दोनों को माइनस करना है एंड आई विल गेट द आंसर। सो प्रॉफिट हुआ मुझे 1215 minus 900. So that would be profit would be rupees 315, right? अब प्रॉफिट हुआ मुझे 315 का, तो मतलब कि मेरे को प्रॉफिट क्या चाहिए था? परसेंटेज। सो प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। सो मुझे प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करना पड़ेगा। तो दिस वाज 315, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 900 डिवाइडेड बाय 900 इनटू 100, बिल्कुल सिंपल। सो दैट वुड बी 35%. Final profit was 35%. That's it. Question 19. Construct a rectangle room such that diagonals Rn is equal to 8 centimeter and the angle between the two diagonals is degrees. Write the steps of construction. देखो, मेरे पास एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। अब रोम, रेक्टेंगल का नाम होना चाहिए ROME, राइट। अब मुझे क्या दिया है? RM, ठीक है, विच इज 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। एंड द एंगल बिटवीन द टू डायगनल्स, ये रही दोनों डायगनल्स, और इन दोनों के बीच में ये जो एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 60 डिग्री। सो व्हाट शुड आई डू? RM मैंने पहले लाइन बनाई विच इज गोइंग टू बी 8 सेंटीमीटर्स, ये मैंने 8 सेंटीमीटर्स बनाई, ठीक है। नाउ डायगोनल के बीच में तो मैं एक लाइन बनाऊंगा 60 डिग्रीज पे, ठीक है। ये कट लगाया यहां पे, दिस वाज द फर्स्ट कट, सो मैंने ये 60 डिग्रीज पे बनाई लाइन, राइट। अब ऑफ कोर्स डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, सो मैंने ई पे कट लगाया एट 4 एंड ओ पे कट लगाया एट 4, सो मेरे को ओ एंड ई दोनों मिल चुके हैं। सो आर से ओ को ज्वाइन किया, ओ से एम, एम से ई, ई से आर। वापस दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एज यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। आगे के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आई होप यू कैन राइट इट प्रॉपर्ली, राइट। Question number 20. Find the volume of cube, okay, whose lateral surface area is 576 centimeter square. Okay, मेरे पास एक क्यूब, okay, पहले विजुअलाइज कर लेना चाहिए तभी आंसर आता है, राइट। तो लेट्स डू इट। अब मेरे पास लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि 4 साइड्स, तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे को 576 दिया हुआ है, being a being the side of the क्यूब। मेरे को वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, वॉल्यूम इज क्यूब, राइट। सो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 576 by 4, so this would go to 144, राइट। सो ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 12, ए 12 आया, तो वॉल्यूम तो बिल्कुल पता ही है मुझे, 12 का क्यूब, that would give you 1728 centimeter cube, right? Next one, the radii of two cylinders are in ratio 3:4 and their heights are in ratio 7:4. Calculate the ratio of their volumes. Okay, so let radius of the first cylinder be 3r, radius of the second cylinder be 4r, right? Height
of the first cylinder be 7h and height of the second cylinder be 4h. मेरे को निकालना क्या है? वॉल्यूम 1 बाय वॉल्यूम 2 एंड वो भी सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, दोनों 1 पे, तो पाई आर स्क्वायर एच, राइट? सो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया. व्हाट अबाउट आर? आर इज 3 टाइम्स आर का होल स्क्वायर, एच इज 7h, राइट? यहां पे 4r का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू 4h. So this comes out to 9r square into 7h by 16r square into h से h cancel, r square से r square cancel, 9 7 the 63 and 16 4s are 64, right? This is your final answer. Ratio of their volumes. This concludes the discussion of St. Kabir School, Chandigarh Term 2 final examination, of course, for Class 8, Session 22-23 for the subject Mathematics. Have a great day, guys.